bench is concerned, भारत की राजनीति में 3 मार्च 2025 एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में एक बेंच फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सुनवाई करने जा रही है। पिछली सुनवाई में जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, डेटा डिलीट मत करना। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला सुनाएगा। क्या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या विपक्ष को ईवीएम पर न्याय मिल पाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ईवीएम पर विवाद क्यों? दोस्तों, भारत में चुनावों की पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम के जरिए चुनावी धांधली की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार हमेशा इसे खारिज करते आए हैं, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने एक सख्त रुख अपनाया। पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा था, ईवीएम से जुड़े सभी डेटा को सुरक्षित रखा जाए, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया जाए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विपक्ष को शक था कि चुनाव आयोग ईवीएम डेटा मिटाकर सबूत नष्ट कर सकता है। यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े शब्दों में चुनाव आयोग को निर्देश दिया। इससे साफ हो गया कि अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। चुनाव आयोग बनाम सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में क्या कर रहा है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विपक्ष की शंकाएं और गहरी हो रही हैं? चुनाव आयोग हमेशा कहता आया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें हेरफेर संभव नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने ईवीएम डेटा डिलीट करने से मना किया तो इस पर सवाल उठने लगे, कहीं कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो वह ईवीएम डेटा की जांच से क्यों डर रहा है? आखिर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? 3 मार्च की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण? अब 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना क्या कदम उठाएंगे। अगर कोर्ट इस बार चुनाव आयोग को और कड़े निर्देश देता है तो यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। यह सुनवाई कई कारणों से बेहद अहम है। क्या ईवीएम डेटा की फॉरेंसिक जांच होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम के पेपर ट्रेल की जांच करने के आदेश देगा? क्या कोर्ट चुनाव आयोग के तर्कों को खारिज कर सकता है? क्या चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश की जाएगी? क्या विपक्ष को मिलेगा न्याय? अब विपक्षी दल इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस बार पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में दस्तक देने वाले हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि ईवीएम से जुड़े सभी डेटा को सार्वजनिक किया जाए और एक स्वतंत्र जांच कराई जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा, अगर सरकार को कुछ छुपाना नहीं है तो ईवीएम डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? वहीं बीजेपी का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और विपक्ष सिर्फ बेवजह मुद्दे को तूल दे रहा है। ईवीएम का पेपर ट्रेल, क्या यह हल हो सकता है? ईवीएम विवाद का हल निकालने के लिए पहले भी एक विकल्प दिया गया था, वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब है कि जब कोई वोट डालता है तो उसे एक पेपर स्लिप मिलती है जिससे वह देख सकता है कि उसका वोट सही गया है या नहीं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान बहुत सीमित संख्या में होता है, जिससे यह पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बार आदेश देता है कि सभी वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाए तो यह चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा? क्या चुनाव आयोग को मजबूर किया जाएगा कि वह ईवीएम से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करे या फिर यह मामला सिर्फ बहस बनकर रह जाएगा? अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया तो यह भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ होगा। लेकिन अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग के जवाब से संतोष जता दिया तो विपक्षी दलों की उम्मीदें धूमिल हो सकती हैं। 3 मार्च पर टिकी देश की नजरें। तो दोस्तों, 3 मार्च का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन अगर यह मामला कमजोर पड़ गया तो चुनावी प्रक्रिया में सुधार की उम्मीदें धुंधली हो सकती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का अगला कदम क्या होगा। क्या सच सामने आएगा? क्या ईवीएम विवाद पर कोई बड़ा फैसला होगा या फिर यह मामला एक और लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा? bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time.
Thank you for being part of us. This is Roy. My brothers. I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior to me. But he was then as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you may not be aware of. He was a Delhi public school student and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi Public School beat Modern School in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dipsites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader and he generously gifts books to all the guests who visit him at home. He is also a theatre aficionado, and in his college days, he had himself directed a play. All his law clerks and interns are treated to English and Hindi plays as part of their itinerary. As my law clerks are present, I would beseech that they do not take a leaf out of that book, because I myself was treated to all those plays by him. So I'm at the receiving end, I cannot give. Now, as he lays down office, you can be sure that he will not retire. He will move on. And I would take this opportunity to wish him all the very best as he opens new chapters in his life and faces new challenges. I bid you adieu, my dear friend. Thank you, Honorable Chief Justice Sanjeev Khanna. Thank you, my brother Justice Sanjay Kumar, for your gracious words. The Attorney General and all the other leaders of the bar, including the President of the Supreme Court Bar Association and the Supreme Court Advocate on Record Association, the current leaders of the bar and the future leaders of the bar. As a young child, holding the fingers of my father, Kishori Mohan Roy, I came to Delhi in 1971 to begin my studies in an English medium school. In Assam, I was a student of a government school offering education in Assamese medium. And eventually, as I always wanted to become a lawyer, I started my legal career in 1982 in this very court. The occasion for me to say the first word was a direction by my then senior, Shri M.L. Lahuti sir, who is present here, to ask for a passover of an item in this very courtroom. The courtroom then was headed by the then Chief Justice Y.V. Chandrachud. Let us say it was item number 17. And item number 16 had many lawyers. So it was a crowded front row. So I had to push my way to say the word Passover. And to my great horror, I realized that I said Passover, but no sound was coming. My vocal cord was not working. I suppose these kind of experiences are there for the young lawyers. So next time when I pushed past and I said
pass over, please item be passed over. At least I visualize this, may not be correct. There was a very stern look because I had a very belligerent tone of saying Passover. The Chief Justice thought that why this young man is trying to say this Passover word with in such a belligerent tone. But that is how perhaps most of us start our journey as a junior. You have mentioned with some kind of affection the way I perhaps treated the juniors in the bar. As a young lawyer, I used to rush physically to the courtroom concerned to give the appearance slip. Those days, you have to give the appearance slip to indicate who are the lawyers who are appearing in a particular matter. Because at the end of the day, in the day's proceedings, the names of all the lawyers will be mentioned. So if I find my name mentioned in the day's proceedings, I used to feel very happy. So I thought the young lawyers today also are no different, like those in 1982. So they would also appreciate their names being seen in the court proceedings. So that was one of the reasons why I used to try and record their names. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।